In this video, we shall explore how to use Kazam, a simple and powerful tool on your Kali Linux system. Whether you are a beginner or an experienced user, Kazam offers a nice interface and robust feature for capturing your screen activity. Okay, let's start. Type the command sudo apt install Kazam. Enter. So Kazam is already the newest version. हमारे सिस्टम में Kazam ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो चलो चेक करते हैं. ये ओपन हो गया है और ये इसके इंटरफेस है. स्क्रीन कास्ट, फुल स्क्रीन, विंडो एरिया, so you can capture coding to your choice. Also you can take screenshot. रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे स्पीकर एंड माइक्रोफोन की सेटिंग्स है. स्क्रीन कास्ट में आप देखेंगे इसकी फ्रेम रेट घटा बढ़ा सकते हो और रिकॉर्ड विद डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स like WEVM, MP4, AVI and others. डायरेक्टरी वीडियो फोल्डर में इसकी सारी वीडियो सेव होती है. यू कैन चेक वीडियो ओपन फोल्डर एंड ये देखो यहाँ पर सारे रिज़ल्ट है. कट करेंगे और यहाँ से फिनिश कर दें.